जो यज्ञ प्रेमी, जो भी यज्ञ प्रेमी बंधु यहाँ यज्ञ मंडप में आ गए हैं, जो पति पत्नी सहित आए हैं, वो यज्ञ वेदी के पास आ जाएं और आचार्य जी उनको बिठाएंगे। जयेश भाई जो मेहसाणा से हैं, वो कुश्ती के कोच भी हैं और दोनों पति पत्नी आए हुए हैं, तो वो भी यज्ञ वेदी के समीप आ जाएं। जो भी इस परिसर में विद्यमान हैं, यहाँ उपस्थित हैं और पीछे बैठे हैं, इधर उधर कहीं खड़े हैं, वो सब यहाँ यज्ञ मंडप में आ जाएं। कृपया आप सब भी यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाएंगे। जनेऊ दिलवाओ, आचमन करवाओ, और जो यज्ञ करना जानते हैं, देख रहे हैं, तो वो यज्ञ करवाने में थोड़ी व्यवस्था करेंगे, थोड़ी सहायता करेंगे। जनेऊ वितरण करवाएंगे, आचमन के लिए जल दिलवाएंगे, थोड़ा सा हाथों में विद्यार्थियों के यजमानों के पास भी आ जाएंगे। ब्रह्मचारी दिव्यांश जी वो यहाँ यज्ञ वेदी पे आओ, और योगेश जी आप भी यज्ञ वेदी पे थोड़ा सा दिशा निर्देश के लिए आ जाओ। अब आपस में कोई बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो यज्ञ जब तक चलेगा तब तक कोई अपना मोबाइल जो भी लाए हैं तो वो उसको थोड़ा साइलेंट कर दें, मोबाइल को थोड़ा अपने ध्यान से दूर करें, यज्ञ से जुड़ें। और ये यज्ञ जो हम करने जा रहे हैं, ये सृष्टि का बहुत उत्तम कर्म है, और इस उत्तम कर्म के लिए अपने आप को भी अपनी अंतरात्मा से पवित्र होकर के, एकाग्र होकर के ध्यान से इस यज्ञ में भाग लेंगे। और जो कुश्ती में प्रतिभागी हैं वो बातें कर रहे हैं, ध्यान दो, बोलना नहीं है आपको, इधर सुनना है। और जो यजमान हैं वो भी थोड़ा ध्यान देंगे, और जो इधर उधर बैठे हुए हैं वो आपस में जो चर्चा कर रहे हैं उनकी आवाज़ दूसरे तक ना जाए। जो इधर उधर घूम रहे हैं कार्यकर्ता हैं, वो तेज तेज ना बोलें, बिल्कुल धीरे बोलें, दूसरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। यजमानों से प्रार्थना है कि कृपया वो सीधे बैठें और आंखें बंद कर लें, और संसार के जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बंद कर दें। अभी ये नाम लिखना बंद कर दो, आप छोड़ दो, बाद में लिखेंगे, अभी छोड़ दो इसको। और जो भी विद्यार्थी आए हुए हैं, जो प्रतिभागी आए हैं, वो भी अब बोलेंगे नहीं, बोलना नहीं है, अब ध्यान से सुनना है। सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखते हुए, और जैसे ध्यान करते हैं ऐसे अंगूठा और उंगली को मिलाते हुए सीधा बैठेंगे, और उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का 3 बार गहरा श्वास लेते हुए जाप करेंगे। ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण
हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस यज्ञ को प्रारंभ करने से पहले इस यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो खड़े होकर के एक बार इधर आएंगे। आप दोनों आइए, हाथ जोड़ेंगे। और ये जो हमारा जो विद्वत वर्ग बैठा हुआ है, इनसे आप कहेंगे ओम आवसो सदने सीदंतु ऋत्विजः। आप बोले ओम। अहम अपने दादाजी का नाम, पिताजी का नाम और अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर के अद्य देवयज्ञ करणाय भवन्तं पौरोहित्येन वृणे। सभी की तरफ से मैं बोलता हूँ ओम व्रतोस्मि। आप सभी को थोड़ा सा तिलक करते जाएंगे, सभी को तिलक कर देंगे। आचार्य जी से शुरू कर दीजिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। आप सभी को करवा दो। आप भी बैठिए। नहीं करना नहीं है, वो कर देंगे आपस में एक दूसरे को। इनको कराओ पहले, जो यजमाना हैं। आप अपने हाथ से इनको तिलक कर दो। हाँ, आगे कराते जाइए। अब सभी ईश्वर स्तुति के मंत्रों के लिए सीधे बैठ करके आंखें बंद करेंगे और ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। अब यहाँ बोलना नहीं है, जाओ। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः।
यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयेणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। सभी बोलेंगे, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए। इस कारण से हम लोग आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। हे परमात्मन, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। अभी आपके सामने जल रखा हुआ है, तो सीधे हाथ में, जमणे हाथ में जल ले लेंगे और जो यज्ञ को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास कुछ यज्ञ को जानने वाले हैं, ऐसे आचार्यों से निवेदन है कि एक दो यज्ञवेदी के पास, यजमानों के पास आ जाएं, तो आचमन आदि में सहायता मिलेगी। और एक दो ब्रह्मचारियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में रहें तो उन्हें भी थोड़ा सा आचमन कराएंगे। सीधे हाथ में जल लेकर के ये जल पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। जब स्वाहा बोला जाए उस समय आपको जल पीना है। जब स्वाहा बोला जाएगा तब मंत्र पूरा होने के बाद जल पिएंगे और जूठा हाथ करके सिर पर उस पानी को नहीं घुमाना है, केवल पानी पीना है। दूसरी बार ले लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, पी लीजिए। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेयस्रयताम स्वाहा, जल ले लेंगे। अब सीधे हाथ में जल लेकर के उसको पीछे की तरफ धुल देंगे और बाएं हाथ में जल लेंगे, उल्टे में, डाबा हाथ में। और जो यज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं वो यजमानों को यज्ञोपवीत उपलब्ध कराएंगे। किसी को यज्ञोपवीत नहीं मिला हो तो वहाँ तक यज्ञोपवीत पहुँचाएँ। और पीछे, इधर मंच के पीछे कुछ हैं, वो आगे आ जाओ। मंच के पीछे कुछ लोग उधर घूम रहे हैं, अगर आवाज़ आ रही हो
तो कुछ कुश्ती लड़ने के लिए आए हुए पहलवान उधर घूम रहे हैं। कुछ प्रतिभागी, राजकिशोर जी, प्रतिभागियों को इधर भेजो, इन विद्यार्थियों को इधर भेज दो। जो कुश्ती लड़ने के लिए प्रतिभागी आए हुए हैं वो कोई वहां नहीं रहेगा। इधर आओ, यज्ञोपवीत लो, सभी जल्दी दौड़ के आएंगे। सब होगा। अभी बाएं हाथ में जल लेंगे, यज्ञोपवीत नीचे रख दीजिए, बाएं हाथ में जल लेंगे। पहले अंग स्पर्श होगा, पहले बाएं हाथ में जल लें। अभी बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियां अंग स्पर्श करेंगे और सामने देखते भी जाएंगे। ओम वांग्म आस्य अस्तु, मुख पर लगाइए। ओम नसुर में प्राणो अस्तु, नासिका पर। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, आँखों पर। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों पर। ओम बाहुओर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं पर। ओम ऊर्वोर्म ओजोअस्तु, दोनों घुटनों पर, जंघाओं पर। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो, सभी अंगों पर जल छिड़क देंगे। अब आपके पास यज्ञोपवीत आ गया है। ये कुछ पहलवान बाद में आए हैं, इन्हें यज्ञोपवीत दो। आपके पास यज्ञोपवीत आ गया, इसको खोल करके हाथ पर रखेंगे। यज्ञोपवीत को यदि किसी के पास ना हो तो वो हाथ खड़ा कर देंगे, वहाँ दे देंगे। ओम, सभी अपने यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर के ऊपर को उठाएंगे और जो प्रतिभागी कुश्ती में भाग लेने के लिए आए हैं, इनके सभी लोग जो चित्र लेना चाहते हैं वो चित्र ले लें। तो जो प्रतिभागी कुश्ती में भाग लेने के लिए आए हैं ये एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। और जो ये प्रतिभागी हैं, आचार्य जी, हाँ, सभी प्रतिभागी जनेऊ ले चुके हैं, ठीक है। चित्र ले लेंगे, एक बार बैठ जाइए, बैठ जाओ। इतने लोग एक साथ यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, ये एक इस कड़ी क्षेत्र में एक मिसाल कायम हो रही है कि लगभग 50 व्यक्ति एक साथ इस यज्ञोपवीत को धारण कर रहे हैं, वेद के मार्ग पर चलने के लिए व्रत ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। सभी यज्ञोपवीत को ताने रखेंगे और हम मंत्र पाठ करेंगे और आप इस यज्ञोपवीत को फिर पहन लेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञत्सत्त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। सीधा इसे गले में डाल लेंगे, गले में डाल करके दाहिना जमना हाथ इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये बाएं कंधे पर, बाएं कंधे से दाहिने कंधे की तरफ नीचे चला जाएगा। सभी ने यज्ञोपवीत धारण किया, सभी ने व्रत लिया। अब आपके पास माचिस रखी होगी, दीपक रखा हुआ है, तो कार्यकर्ता मुख्य यजमान की तरफ इस दीपक को बढ़ाएंगे और अग्नि जलाने की जो व्यवस्था है उसको करवाएंगे।
ક્યારે ઘીની નદીઓ વહેતા જોઈ છે ખરા? હા, અમે એ જ ઘીની વાત કરી રહ્યા છીએ કે જે તમે ખાવામાં ઉપયોગ કરો છો. ગુજરાતમાં એક ગામ એવું છે કે જ્યાં ઘીની નદીઓ વહે છે, સાથે સાથે સ્વિમિંગ પુલ પણ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે. અહીં કોઈ વાત મજાકની નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાની વાત છે. કહેવાય છે કે ગાંધીનગર પાસે રૂપાલ નામનું એક ગામ આવેલું છે. આ ગામમાં વરદાય માતાનું મંદિર છે. પાંડવોના સમયથી જ અહીં એક પલ્લીની રચના કરવામાં આવે છે કે જે પલ્લીની અંદર લોકો ઘી ચડાવીને પોતાની માનતા પૂરી કરતા હોય છે. લોકોની માનતાઓને આસ્થા એટલી બધી વધારે હોય છે કે પલ્લીમાં ચડતા ઘીને કારણે આખા ગામમાં ઘીની નદીઓ વહેવા લાગે છે. હવે સવાલ થાય કે એટલું બધું ઘી આવે છે ક્યાંથી? તો જે પણ વ્યક્તિની માનતા હોય એ 5 કિલો, 10 કિલો કે 15 કિલો ઘી માતાજીની પલ્લી પર ચડાવે છે અને પોતાની માનતા પૂરી કરે છે. આ રીતે ગામ આખું ઘીથી તરબોળ થઈ જાય છે. આ તો શ્રદ્ધાની વાત છે, પરંતુ માતાજી આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવાનું ક્યારેય ન કહી શકે. હા, શ્રદ્ધા પૂરી કરવા માટે આપણે પલ્લીમાં ઘી ચડાવવું જ જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ઘીનો બગાડ કરવો એ યોગ્ય નથી. કહેવાય છે કે આ ઘી કે જે રસ્તા પર હેમખેમ પડ્યું હોય છે એને કેટલાક ગરીબ લોકોમાં વિતરણ કરી દેવામાં આવે છે. રસ્તા પર પડેલું આ ઘી ખૂબ જ ગંદા સ્વરૂપમાં હોય છે, જે ખાઈને ઘણાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. માતાજીની શ્રદ્ધાનો સવાલ છે તો આપણે જરૂરથી પલ્લીમાં ઘી ચડાવીને આપણી માનતા પૂરી કરવી જોઈએ, પરંતુ આવી રીતે ખરેખર ઘીની નદીઓ વહેડાવી ન જોઈએ અને તેમને બાળકોના પોષણ આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ. સદીઓથી આ પ્રથા ચાલી રહી છે, તેની સાથે લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે અને આસ્થા ખરેખર સાચી પણ છે. પણ ભગવાન જ કહીને ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ લખ્યું છે કે અન્નનો બગાડ ક્યારેય કરવો ના જોઈએ. એ ખરેખર ભગવાન જ છે. અહીં ઘીનો બગાડ આપણે ચોખ્ખો જોઈ શકીએ છીએ, તો ખરેખર આ બાબતથી આપણે થોડુંક જાગૃત થવું જોઈએ. ગુજરાતમાં આજે પણ 10%થી પણ વધારે લોકો કુપોષિત છે અને કુપોષિત બાળકોનો જન્મ પણ થયા રાખે છે. માતાને ચડાવવામાં આવતા ઘીથી ઘણા બાળકોને પોષણ મળી શકે એમ છે, તો આવા ઘીનો ઉપયોગ ગુજરાતમાં કુપોષિત બાળકોને પોષણ આપવા માટે કરવો જોઈએ. આ બાબતે તમારું શું માનવું છે? કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. जो हमारे मुख्य यजमान हैं उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं, तो उनको दीपक जलाने के लिए माचिस दे दीजिए. वो बहन जी दीपक जलाएंगी. दीपक जलाइए. मंच के पीछे से आवाज आती रहती है, थोड़ा इधर आ जाओ. दीपक जलाएंगे. ओम भूर्भुवः स्वाहा. अब दीपक से अग्नि लेकर के यज्ञ वेदी के बीच में रखेंगे, तो थोड़ा सा घी निचोड़ देंगे. हाँ जी, इसको दीपक को यहीं रखो और यहीं रख दो और इसका घी निचोड़ दो, थोड़ा घी. हाँ, और दोनों पति पत्नी हाथ में ये ले लेंगे, जलती हुई अग्नि लगाएंगे उसमें. हाँ, और खड़े हो जाएंगे. अग्नि लेकर के खड़े हो जाइए. ओम भू, हाथ लगा लो बाहर से, बुझे नहीं. ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरेव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीरेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे. रख दीजिए, खड़े रहिए. अब जो कार्यकर्ता हैं वो समिधाएं लगाएंगे. आप खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए. हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो और सभी देव जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो यज्ञ में आपके यज्ञ का लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हों, ऐसी कामना करते हुए मंत्र का पाठ करेंगे. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. अब यजमान बैठ जाएंगे और दीपक को दीपक के स्थान पर पहुंचवा दीजिए. दीपक को दीपक के स्थान पर रखवाएं. आगे इधर से इधर से इधर से. हाँ, अभी 8 अंगुल की 3 संविधाएं यजमानों को प्रदान करें. तो 3-3 संविधाएं एक एक जोड़े को दे दें, तो दोनों पति पत्नी मिल करके एक एक संविधा लगाते रहेंगे. योगेश जी, इतनी संविधाएं एक एक जोड़े को 3-3 बहुत हो जाएंगी. फिर पतले वाली दे दीजिए, थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं. ठीक है, अभी संविधाएं लगवाइए, घी में डुबोइए और जो दोनों पति पत्नी मिल करके एक संविधा को पकड़ेंगे और स्वाहा का उच्चारण करते हुए सभी यज्ञ में जुड़ जाएंगे.
स्वयं को यज्ञ से जोड़ देंगे स्वाहा का उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदन्न मम। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं और आवाज़ सुन रहे हैं, मंत्रों को सुन रहे हैं, वो सब स्वाहा बोलेंगे। जो विद्यार्थी आए हुए हैं कुश्ती लड़ने के लिए, वो सभी स्वाहा बोलेंगे। स्वाहा बोलना है सभी को। दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवश्यत घृतैर्बोधयतातिथिम अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम सुषमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदन्न मम। तीसरी समिधा घी में डुबोएंगे, हाथ में ले लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरशे इदन्न मम। अभी समिधाधान हो गया है। अब घी की चम्मच जिन यजमानों के पास है वो चम्मच ले लेंगे और दोनों पति पत्नी मिलकर के आहुति लगाएंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसेदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसेदन्न मम। जल सेचन कराएंगे। आचार्य सुनील जी से प्रार्थना है जल सेचन के लिए। थोड़ा सा पूर्व दिशा में जल सेचन। ये पूर्व दिशा। दक्षिण से उत्तर की ओर जल का लोटा ले लीजिए। ओम अदितेनुमन्या स्व। अब इधर से दे दीजिए पश्चिम दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्या स्व। छोड़ते जाइए। यहाँ से दीपक तक, जहाँ दीपक रखा है। ओम सरस्वत्यनुमन्या स्व। ओम देव सवितः प्रशुभयज्ञं प्रशुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। पूरा एक परिक्रमा कर देंगे। दोबारा दे दीजिए। इधर जल सेचन करते जाइए।
आगे को बढ़ाते जाएंगे। अब घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। 4 आहुतियां। पहली आहुति उत्तर दिशा में, पहली आहुति उत्तर दिशा में आचार्य जी संकेत कर देंगे। तो उत्तर दिशा, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम। अब आहुतियां बीच में डालेंगे सभी। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्न मम। सामग्री भी हमारे पास उपस्थित है, तो जो घी से आहुति दे रहे हैं वो घी से आहुति देते रहेंगे, और जो आहुति नहीं दे रहे हैं वो सभी सामग्री ले लेंगे और आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। स्वाहा के साथ आहुति देंगे, स्वाहा बोलेंगे। ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय दन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय दन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणः पानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन म उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी यज्ञ में जो आहुति देने के लिए आ जाएंगे। सभी अतिथियों से प्रार्थना है कि यज्ञ वेदी के पास आकर के, और आचार्य विक्रम जी से निवेदन है कि वो उस व्यवस्था को कर लें, वो आहुति डलवाएं। हाँ तो आइए। खड़े खड़े
खड़े खड़े डलवा दो और जो यजमान हमारे आए हुए हैं वो आहुति प्रदान करते रहेंगे। एक एक यजमान जोड़े के बीच में खड़े होकर के आप आहुति लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 11 आहुति मैंने बोल दी हैं। यदि किसी ने नहीं दे पाई हो तो वो खड़े रहेंगे, हम आहुति लगातार चालू रखेंगे, आप अपनी पूरी करके हटेंगे। और साथ के साथ ही विद्यार्थी भी जो हमारे पास पहलवान लोग आए हुए हैं, जिनका आज प्रतियोगिता होनी है या जिनकी हो गई है, वो भी यज्ञवेदी के पास आएंगे। सभी ने यज्ञोपवीत लिया हुआ है, तो 3-3 आहुति लगा करके आप अपने आप पीछे हटते जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक एक पंक्ति 3-3 आहुति लगा करके हटते जाएंगे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं अथवा और भी कोई संस्था के लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी संस्थाओं के, सभी मतों के, संप्रदायों के लोग इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए हम सभी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। सभी आ जाइए और सब लोग मिलकर के इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करेंगे। वो ये ना समझें कि हमें तो कहा नहीं, सभी के लिए एक सामान्य, सभी लोग, कोई संप्रदाय, कोई मत, कोई दल, कोई संगठन हो, वो सभी लोग आकर के इस यज्ञ में भाग लें, आहुति प्रदान करें। 3-3 आहुतियाँ प्रदान करते जाएंगे और आप पीछे हटते जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी आवाज़ स्वाहा की तेज आनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। નમસ્કાર. ભારત દેશમાં શ્રદ્ધાની પરંપરા અને ઘણી બધી કહાનીઓ છે, પણ આજે રાધેશ્યામ પટેલ અમારી ઓફિસ આવ્યા છે, ફરી એકવાર આવ્યા છે અને એમની પાસે એ પ્રોજેક્ટ છે જે રૂપાલની પલ્લી માટે ઘણીવાર પોતાના ગળામાં આને લટકાવીને તો ઘણીવાર અલગ અલગ હોર્ડિંગ્સ બેનર લઈને ફરતા હોય છે. કોઈની પણ શ્રદ્ધાને પડકારવા કરતાં પણ વિશેષ આ જે પ્રોજેક્ટ છે એ તમે રૂપાલ ગામનું નામ સાંભળ્યું હશે. ગાંધીનગર પાસે આવેલું રૂપાલ ગામ છે અને રૂપાલ ગામમાં ઘીની નદીઓ રેલાય છે. હવે એ ઘીની નદીઓ રેલાય તો દરેક લોકો ખૂબ શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ ઘી ત્યાં ચડાવવા માટે જાય છે માતાજીને, પણ એના પછી પ્રશ્ન એ આવે કે તમે એવા દ્રશ્યો પણ જુઓ છો કે જ્યાં ખોબે ખોબે કોઈ એ ગંદુ ઘી છે એ ભરે છે ડબ્બામાં અને ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય છે.
તો એમણે વિચાર્યું કે એનું કંઈક સોલ્યુશન લાવીએ. એટલે સૌથી પહેલાં તો એમની પાસેથી જ સમજીએ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. અને આપણે આ 4 રસ્તા થયા અને આ એનો એકચ્યુઅલી હકીકત આવી છે કે ભાઈ ગામનો ચોક છે અને પલ્લીજીને મોટા ભાગે અહીંયા ઊભા રાખે છે અને આપણે હવે એવું કરવા માંગીએ છીએ કે અહીંયાથી અહીંયા 20 ફૂટ અંતર છે અને 6 ઇંચ ડેપ્થ વાળો એક ભાગ આને તોડી નાખીશું અને આપણે તોડી નાખ્યો માની લો. અને પછી નીચે આ તાવડી મૂકી આ દીધી. તાવડી જેવો આકાર છે. આ કાણા નથી પાડેલા, રેડીમેડ છે એટલા માટે. પણ અહીંયા હોલ હશે સેન્ટરમાં, જેમ બાથરૂમમાં હોય અને ગટર સિસ્ટમ કરીએ એવી રીતે અહીંયા પાઇપ સિસ્ટમ કરવાની અને અંડરગ્રાઉન્ડ એ બધું કામ કરી લેવાનું. એના પછી આને વ્યવસ્થિત મૂકી દેવાનું. એટલે એમને કંઈક આ પ્રકારે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે અને પલ્લી મોટા ભાગે અહીંયા ચોકમાં આવીને ઊભી રહે છે. હું સમજી છું એટલે હું તમને આવે એની પહેલા કહું કે જે ઘી આવે એ પલ્લી અહીંયા એક્ઝેક્ટ ઊભી રહે. માતાનો રથ આ રહ્યો, પલ્લીમાંનો રથ અહીંયા આવીને ઊભો રહેશે. હા, એકચ્યુઅલી આ પ્રસંગ શરૂ થાય પહેલા આની પર પ્લાસ્ટિક હશે જેથી દિવસ દરમિયાન જે ધૂળ ઉડતી હોય, ગુલાલ ઉડે, એ બધું આની પર પડે નહીં. પલ્લી નજીક આવી જાય એટલે આ પ્લાસ્ટિકને લઈ લેવાનું અને પછી આ મૂકી દેવાનું. પછી જે આજુબાજુ ટ્રેક્ટર મૂકેલા છે એ લોકોને એમાંથી જેમ ઘી અભિષેક કરે છે એમ કરે, કઈ જરાય ફરક નહીં કરવાનો. અને આપણો આ ઢાળ એવો છે કે એ ઢાળના કારણે એને યોગ્ય જગ્યાએ જે સિસ્ટમ બનાવી છે એ પ્રમાણેનું ઘી જતું રહેશે. અને એ જે જતું રહે પછી આપણે નીચે બહુ જગ્યા મોટી નથી રાખતા, ફક્ત 500 અથવા 1000 લીટરની જગ્યા જોઈએ છે નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ. એને પછી મોટર દ્વારા બીજે શિફ્ટ કરી શકાય, જ્યાં આપણે એને પ્રોપરલી પેક કરી શકાય. અથવા જે લોકો પોતાના વાસણ લઈને આવ્યા હોય એને ડાયરેક્ટ ચકલી ખોલીને એમાં આપી શકાય ઘી. એટલે એને વાટકોથી એટલે જેમ કે પલ્લી પૂરી થાય આપણે એવું માની લીધું કે ઘી ને બધું વ્યવસ્થિત થઈ ગયું, પણ ગામનો ચોક ક્યાં ગયો પછી? તો અચ્છા, ઓકે, હા, એ તમારો પ્રશ્ન છે. હવે આ સમજો કે પલ્લીજી જતા રહ્યા, હવે આ ખાડો છે, ખાડો નથી રહેવા દેવો, તો આ પેવેલ્સ છે. હા, અચ્છા, એટલે ઉપર, એટલે આ ખાલી એક જ દિવસ રહેશે એવું, બાકી આ પાછો સમતલ રોડ બની જશે. સમજો કે આપણે એ મૂકી દીધું અને બધું સમાંતર થઈ ગયું, નોર્મલ વેહિકલ ચાલશે. એટલે આ દર વર્ષે રીયુઝેબલ કર્યું આપણે. અને એકચ્યુઅલી આ બીજું ઉદાહરણ છે. આ એકચ્યુઅલી થશે તો બીજું ઉદાહરણ છે. બાકી નરેન્દ્ર મોદીજીએ બહુ શરૂઆત પહેલા કરી હતી રિવરફ્રન્ટમાં. ગણપતિ મહોત્સવ પણ થાય હતા ત્યારે એમણે, અને એ નદી ગંદી પણ ન થાય અને કુંડ બનાવ્યા, ગણપતિનું વિસર્જન થયું. એમને ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા, 3 વખત મુખ્યમંત્રી, 3 વખત વડાપ્રધાન થયા. હું તો ગામડાને પણ કહું છું કે તમે ભગવાનને રાજી કરો અને ગરીબને રાજી કરો તો તમને પણ આશીર્વાદ મળશે અને તમારા ગામમાં સોનાના રસ્તા બનશે. ખરેખર તો 50 કરોડ એટલે કે નાની રકમ નથી. અને આ જો રકમ એમના ગામમાં વપરાય ને તો જે ધંધો કરવા માંગતા હોય એને લોન આપી શકે આ જ પૈસે. ઘણું બધું, કે સ્કૂલો બની શકે, હોસ્ટેલ બની શકે. 50 કરોડનું ઘી અભિષેક થાય છે દર વર્ષે રૂપાલમાં, જેનો સદુપયોગ પણ થઈ શકે છે બીજી બધી રીતે. ઓકે, હું તો કહું કે આ જો પરંપરા આ રીતે થોડીક બદલે ને તો 50 કરોડની જગ્યાએ ડબલ પણ થાય, અને ડબલ થાય એટલે ડબલ ફાયદો થાય. હા, ડેફિનેટલી વાત સાચી છે. ઘણા બધા લોકો એવા હશે કે જે ઘી આ રીતે બગડે કાં તો પછી પેલું પગમાં આવે એવું માનીને નહીં જતા હોય, તો એ લોકો પણ જઈ શકે. બીજું, આમાં તો પરંપરાને કોઈ ડાઘ નથી લાગતો, સ્પર્શ નથી થતો, પરંપરા યથાવત છે અને ઘી પણ ચોખ્ખું રહે છે. આપણે કોઈ જાતિઓનું અપમાન નથી કરી રહ્યા, કોઈ માણસને માણસની જેમ રાખવાની આની અંદર વધારે સારું. અને બીજું કે આ સમય છે એ જ સારો સમય છે આ બધી વાતોને સુધારવાનો. એ જે શ્રદ્ધાનો રૂપિયો છે એ ગામમાં આવે તો ગામનો કેટલો વિકાસ થઈ શકે. એટલે રૂપાલ ગામના લોકો પર છે કે એમણે આ વાતને વધાવવી છે કે પછી આ વાતને એ રીતે જોવી છે કે ભાઈ તમે અમારી શ્રદ્ધા સાથે ચેડા કરનાર કોણ? તો એ તો ગામના લોકોની મરજી. જો તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો ને તમારી આજુબાજુમાં કોઈ તમે એવા વ્યક્તિને ઓળખો છો જે રૂપાલ ગામનું છે, તો એમને આ વિડીયો ચોક્કસથી મોકલજો. ખાલી તમે સાંભળો, એના પછી સ્વીકાર કરવો કે નહીં એ તો સંપૂર્ણ ગામની મરજીની વાત છે. ધારો ગામ માની જાય તો સારું છે, ધારો કે નથી માનતો, જે ભક્તો જઈ રહ્યા છે 10 લાખ લોકો, એને આપણે એવું કહી શકીએ કે તમે જે ઘી અભિષેકની માનતા રાખો છો એવો ભાવ પણ સાથે રાખો કે તમારું ઘી અભિષેક થયા પછી શુદ્ધ એવું રહી શકે, સોના જેવું કે કોકની રોટલી પર ચોપડવા જેવું રહે. એવો ભાવ કરશે તો પણ માતાજી સાંભળશે. વાત સાચી છે. એટલે એ ઘી કોઈની ગરીબની રોટલી પર જાય તો એનાથી વિશેષ માતાજી ક્યારે ખુશ થવાના. થેન્ક યુ સો મચ રાધેશ્યામભાઈ અમારી સાથે જોડાવા. राष्ट्र भरता होती राष्ट्र के लिए ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वानासुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुः रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो
वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अभी यहाँ पर कई संगठनों के लोग आए हुए हैं, एक बार ध्यान देंगे। पीछे ये चर्चा कर रहे हैं, पीछे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या अन्य कोई संगठन के लोग आए हुए हैं। तो देखो वेदों के अंदर संगठन सूक्त है, संगठन के मंत्र हैं। तो हम सब मिलकर के संगठित होकर के एक होकर के कार्य करें तो सभी हम लोग मिलकर के एक साथ इकट्ठे होकर के इस राष्ट्र को महान बनाएं, ऐसी कामना करते हुए संगठन सूक्त के मंत्रों से आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सम समिद्युवशे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इडस्पदे समिध्य से सनोव शून्याभरा स्वाहा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते स्वाहा। ओम समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा। ओम समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासते स्वाहा। यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं और कई बार जीवन में ऐसा मन करता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये दुर्व्यसन है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता। तो यहाँ ये राष्ट्र रक्षक सभा का जो मंच है, जो यज्ञ है, ये एक विश्वगुरु हमारा राष्ट्र कैसे बने इसका मंच है। तो उसमें जो कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय से हो, संगठन से हो, किसी भी जाति वर्ण से हो, जैसा हमने मान रखा है उस हिसाब से मनुष्य हो, मनुष्य मात्र के लिए ये यज्ञ है। तो जो कोई भी अपना दुर्व्यसन छोड़ना चाहता है तो वो यहाँ आ जाएं, एक आहुति उनसे लगवाएंगे और वो आहुति प्रदान करें। मावा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं अथवा अन्य किसी पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग यदि चाहते हों तो वो छोड़ सकते हैं। कोई यदि हो, यजमानों में विशेष करके यदि कोई ऐसा दोष आ गया है और छोड़ना चाहते हैं तो बताइए। छोड़ना चाहते हो तो हम एक मंत्र बोलते हैं और एक शुभ संकल्प लें कि मैं आज ये यज्ञ कर रहा हूँ, तो आज से मैं राष्ट्र के लिए अच्छा काम करूँगा और इतना काम करूँगा, इतने समय काम करूँगा, ऐसा संकल्प लें। तो एक बार सभी मंत्र बोलेंगे, हम लोग मंत्र बोलेंगे, आप अपना संकल्प है उसमें दोहराएं और उसके बाद उस संकल्प को आहुति के साथ अग्नि के सामने साक्षी कर लें, ईश्वर को साक्षी करें और उस संकल्प को फिर आप दोहराते रहें, जिससे कि आपको बल मिले राष्ट्र का काम करने के लिए, समाज का कार्य करने के लिए। अग्नि से प्रार्थना करें वो आपके संकल्प को सफल करने के लिए आपको बल प्रदान करे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्
इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। अब पूर्णाहुति, हमारा यज्ञ पूर्णता की ओर है, तो इसको हम अभी पूर्णाहुति कर देते हैं। यदि कोई रह गए हों तो वो आहुति लगा सकते हैं, अथवा तो अब हम इसकी पूर्णाहुति कर देते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अभी परमपिता परमेश्वर की कृपा से जो हमारा जो यज्ञ हम कर रहे थे वो पूरा हुआ। अब प्रार्थना के लिए, आरती के लिए जो यजमान हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो खड़े हो जाएंगे। आप भी सब पीछे से खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। हम सब मिलकर के और आरती बोलेंगे, आरती करेंगे। यहाँ आ जाओ। तो आरती की थाली जो है ले आइए, दीपक जलाएंगे उसमें। स्वामी जी फूल डाल के। आचार्य जी से आप मिल लें अभी। ओम पहले यज्ञ कुंड की आरती उतारेंगे, उसके बाद फिर वेद की आरती उतारेंगे। हाँ हाँ, सभी को दे सकते हैं। शुरू करेंगे। ओम जय जगदीश पिता स्वामी, जय जगदीश पिता। विश्व विरंच विधाता, विश्व विरंच विधाता, जगत्राता सविता। ओम जय जगदीश पिता। अनंत अनादि अजन्मा, अविचल अविनाशी, स्वामी अविचल अविनाशी। सत्य सनातन स्वामी, सत्य सनातन स्वामी, शंकर सुख राशि। ओम जय जगदीश पिता। सेवक जन सुखदायक, जन नायक तुम हो स्वामी, जन नायक तुम हो।
शुभ सुख शांति सुमंगल, शुभ सुख शांति सुमंगल, वरदायक तुम हो। ओम जय जगदीश पिता, मैं सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी, प्रभु तुम मेरे स्वामी। हृदय पटल में प्रगटो, हृदय पटल में प्रगटो, प्रभु अंतर्यामी। ओम जय जगदीश पिता, काम क्रोध मद मोह कपट छल व्यापे नहीं मन में, स्वामी व्यापे नहीं मन में। लगन लगे मम मन की, लगन लगे मम मन की। जगदीश पिता, बोलिए वेद भगवान की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी को आरती दे देंगे, सभी आरती ले लेंगे। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે કૃપા ઠક્કર। તો ઘણા ટાઈમથી મેં આ રસ્તા પર જોયું છે કે એક વ્યક્તિ જે છે તે લોકોને કંઈક સંદેશ આપી રહ્યા છે, તે મને જોવા મળ્યું છે। તેથી હું તે જાણવા માટે બુલેટિન ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ટીમ સાથે પહોંચી ચૂકી છું। તો તે વ્યક્તિ જે છે તે એક પરંપરાનો જે સંદેશ જે છે તે લોકોને આપવા માંગી રહ્યા છે। તો રૂપાલ ગામ છે જ્યાં 5000 વર્ષ જૂની પરંપરા ચાલતી આવી છે। વરદાયની માતાજીને ઘી અભિષેક પરંપરા જે છે તે ચાલી આવી છે।
તો તે અંતર્ગત તે વ્યક્તિ જે છે તે લોકોને કંઈક સંદેશ આપવા માંગી રહ્યા છે તે આપણે જાણીશું. આપણે ઘી બધું પહેલા વર્ષોથી થાય છે કે ઘીનો બગાડ થાય એ ઘીનો તમે છે ને ક્યાંક સદુપયોગ કરી શકો, બીજાને તમે ગરીબને આપી શકો, ખવડાવી શકો. ઘી તો નકલી ઘી જેટલું બને છે. હા, ઈનો કરે ને એ બંધ કરાવો ને. આજે કરતા ને આ બધું કેવું થાય છે? નકલી ઘી બંધ કરાવો, ઘી બંધ કરાવો, લોકો કસી વાળા જોર જાય છે એ બધું બંધ કરાવો. આ તો આ એ જ થયું ને, તમે એક ધંધો લઈને ફરો છો. એમને શું કહ્યું કે તમારી માનતા પૂરી કરશે માતાજી, પણ એક ચમચી ચડાવશો તો બાકીની પહોંચ પડાવો, તો પણ લોકો પહોંચ પડાવવા નથી માંગતા. આજે તમારો જે મત છે ને, તમે જે કશો તમે અંદરથી જે મત તમે બહાર લાવશો ને, એક 4 જણા સાંભળશે અને એમાંથી એક જણ શીખશે. 4 ની શીખ એ જ કહીએ આપણે. એક જણ એમાંથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. પછી આ જે કરવાનું એ નહીં કરતા. આપણો અવરું શું કામ ધંધો? આ વસ્તુ તો 11 મહિનાથી આ લોકો ગાયું પકડે છે, કસી વાળે જાય છે, એવું તો કંઈ નહીં કરતા. તો હવે તેની રાહ જોવાની. ગવર્મેન્ટની અંદર નહીં આવતું. મને તમે નહીં માનો, સરપંચની ઓફિસમાં બેઠો તો મને કીધું કે આવતા વર્ષે જીવતા હોય ને તો મને કહેજો હું તમારો ગુલામ થઈશ. એક જ મહિનો બાકી રહ્યો છે. મારા વિડીયોમાં છે, યુટ્યુબના વિડીયોમાં છે, એ ભાઈ મને એવું કહેતા હતા કે ધારો કે તમે આવતા વર્ષે મળો મને તો હું તમારો ગુલામ થઈશ. એક જ મહિના પછી મારો ભાઈ એ મારા ગુલામ થવાનો નકલી ઘીનું લો, નકલી પનીરનું લો. હા, એ નહીં કરો. તમે આવું ઊંધું શું કામ પકડો છો? એક આ કામ તમે માતાજી કરો, આ શું કામ આ કામ મને કરવા દો. કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે. તો આ કામ મને કરવા દો. તમે તમારું તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2023 રૂપાલપલ્લી રથના સ્વયંસેવકો પ્રણામ. જય જય શ્રી વરદાઈ માતાજી. પલ્લીમાં રથ પર ઘી અભિષેકની કેટલા વર્ષ જૂની પરંપરા છે. પરંપરા કેવી છે તે અમને લેખિતમાં પુરાવા સાથે જાણવા માગીએ છીએ. અમે જાણવા માગીએ છીએ કે નીચેના આપેલા 7 પ્રશ્નોમાંથી સાચી પરંપરા કઈ. પ્રશ્ન 7. લાખો શ્રદ્ધાળુની માનતાનું ઘી ટ્રેલરમાં બચેલું શુદ્ધ ઘી ટ્રેલર ખોલી ઘી ગામના રસ્તા પર ઢોળીને માતાશ્રી વરદાયીને ખુશ કરવાની તમારી પરંપરા છે. મારું નામ રાધેશ્યામ પટેલ છે. ઉંમર 62 વર્ષ છે. કાયદાકીય સલાહ લઈને પુરાવા સાથે હાઈકોર્ટમાં PIL કરવાનો છું. આ વર્ષે પલ્લી મહોત્સવ 2023માં વિચારીને મહોત્સવ કરશો, નહીં તો ભારે પડશે. અમારા ગ્રુપમાં વકીલોની ફોજ છે. અમારા ગ્રુપમાં રેશનાલિસ્ટોની ફોજ છે. જય જય વરદાઈ માતા. રૂપાલપલ્લી મહોત્સવ પરિવર્તન અભિયાન 2023 રાધેશ્યામ પટેલ. 9023960692 ઓનલી વોટ્સએપ મેસેજ.